Hola, ¿cómo estáis? हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो आपने अब तक सीखा है उसका थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, कि आपने क्या सीखा है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे आ बुक, ठीक, आ बुक है तो कैसे कह सकते हो आ बुक। अगर यहाँ पे आ गया द बुक, ठीक, अगर है यहाँ पे मैनी हाउसेस, ओके, मैनी हाउसेस, ओके, और यहाँ पे है मैनी बुक्स, ओके। तो बताएं कैसे बोलेंगे इसे। un libro, ओके, un libro, the book el libro, ओके। many houses, unas casas, okay, and how to say many books, unos libros, okay. The students, los estudiantes, okay, los estudiantes. Now the girls, how to say The girls, las chicas. I am at the office. She is at she is, okay, she is a mother. You are a father. He is a student. You are an engineer. How to say? I'm at the office. Yo soy. How do you soy? Because you're at the office, it's not a permanent. But it is a simple sentence. It is a simple sentence. So simple sentence will come under yo and the soy. It's same part. Like it's a simple sentence. I am at the office. No. It's telling a temporary moment. Okay, yo soy. Okay, if you say yo soy, okay, yo soy en la oficina, that means कि आप परमानेंटली ऑफिस में हो। ओके, तो yo estoy, okay, estoy, yo estoy en la oficina, okay, en la oficina. Understood? She is a mother. Él es una madre. Ella es una madre. You are a father. Tú eres un padre. Tú eres un padre. Okay. He is Él es un estudiante. Él es. Tú eres ingeniero. ingeniero. So you are telling, okay? Él es un estudiante. Is it right? Before No, profession you cannot put article. आपको profession से पहले article का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए él es estudiante. Okay? You are an engineer. tú eres ingeniero. ingeniero. तो आज आपने नेट टेस्ट देखा, आपको इससे जो पढ़े हो उसका आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। थैंक यू।